हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा, आज हम थोड़े से मैक्रो इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। और द टॉपिक दैट वी विल बी गोइंग अहेड एंड वी विल बी फोकसिंग ऑन, हाँ, दैट is going to be basically money. So if you go ahead and if you look into your course, you will realize that macroeconomics has three main parts. उसके तीन मेन बेसिकली पार्ट्स होते हैं। और उसमें से हमारा एक पार्ट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, दैट इज मनी एंड इन्फ्लेशन। दैट इज मनी एंड इन्फ्लेशन। तो हमारा सारा का सारा फोकस आज, इट इज गोइंग टू बी ऑन दैट मनी एंड इन्फ्लेशन टॉपिक। ठीक है, ठीक है बेटा, लेट्स लुक एट द फर्स्ट न्यूमेरिकल। मैंने थोड़ा इसको न्यूमेरिकल बेस्ड रखने का ट्राई किया है रादर देन एमसीक्यू बेस्ड। द एम इज टू डिस्कस सम कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो एज वी प्रोग्रेस थ्रू दीज न्यूमेरिकल्स। पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। A central bank increases reserve requirement from 10% to 12%. So reserve requirement जो है वो 10% से 12% पे जा रही है। It says calculate the effect on money multiplier. हमें बताना है मनी मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या होगा। What will happen to money multiplier? And discuss how this change will impact overall money supply. और इसी से एक और क्वेश्चन जो बनता है वो भी हम आज डिस्कस करेंगे, दैट हाउ इट विल इम्पैक्ट द मनी सप्लाई। इससे मनी सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर एनीवन? बेटा मनी मल्टीप्लायर इज वन डिवाइडेड बाय रिजर्व रेशियो, वन बाय आर, है ना। तो केस वन में जब रिजर्व रेशियो 10% था, what will be your money multiplier? It will be 1 divided by 10% means what? 10 by 100 माने 0.10। और 12% क्या होता है? 12 by 100 माने 0.12। तो जब मनी मल्टीप्लायर, जब रिजर्व रेशियो इट वाज 10%, 0.10, so what will happen? 1 divided by 0.10 माने you will get the answer as 10। और जब हमारा रिजर्व रेशियो व्हेन इट विल बी 12%, देन व्हाट विल बी आवर मनी मल्टीप्लायर बेटा? 1 by 0.12, अप्रोक्सीमेटली यू विल गेट द आंसर एज 8.33। तो पहला जो हमारा इससे क्वेश्चन बनता है दैट वी आर सॉल्विंग हियर इज, अच्छा इससे बहुत चीजें आती हैं जो हमें इंटरप्रेट करनी है, वी हैव टू बी वेरी क्लियर विद इट। कि हमने एक चीज ये सीखी अब यहाँ पे, दैट व्हेनेवर रिजर्व रेशियो इंक्रीजेस मनी मल्टीप्लायर डिक्रीजेस। पहली चीज ये आ गई हमारे पास। बेटा सेकेंड चीज जो हम इस क्वेश्चन से सीखते हैं वो ये है कि व्हेनेवर योर रिजर्व रेशियो वाज 10%, मनी मल्टीप्लायर को अगर हमें निकालने को दिया जाए इट विल बी 10। जब रिजर्व रेशियो 12% हुआ तो मनी मल्टीप्लायर का वैल्यू आ गया 8.33। दैट्स द सेकेंड थिंग जो हमने इसमें सीखी है। द थर्ड थिंग इज हाउ इट विल चेंज द ओवरऑल मनी सप्लाई। Now, if money is changing, money is multiplying less number of times. 10 times की जगह money is multiplying 8 times. तो automatically money supply will be lower. Money supply will be lower. So it will lead to contraction in the money supply. तो ये तीसरा चीज हो गया हमारे पास, that whenever reserve ratio increases और मनी मल्टीप्लायर डिक्रीजेस, इन दोनों ही केस में हमने एक चीज समझी, दैट देयर इज कॉन्ट्रैक्शन इन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई विल डिक्रीज। ठीक है, सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स बेटा जो हम इस न्यूमेरिकल से सीख सकते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन, लेट्स ट्राई टू टेक द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड ट्राई टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is your next question, beta. Read it, try to do this. Assume individuals hold 20% of their money
in cash and reserve ratio is 10%, what is money multiplier in this economy? ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो. Try to do this. Find the money multiplier. Assume individuals hold 20% of their money in cash. Reserve ratio is 10%. What is the money multiplier? Try to answer this question, beta. Okay, ठीक है. Let's try this together now. तो बेटा वेरी सिंपल फॉर्मूला जो हमारे पास है, एंड ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, दैट इज द करेक्ट आंसर. द फॉर्मूला फॉर मनी मल्टीप्लायर इन दिस केस जो आप यूज करोगे, इट विल बी दिस. तो ये हो जाएगा 1 प्लस करेंसी रेशियो अपॉन रिजर्व रेशियो प्लस करेंसी रेशियो. हमारा करेंसी रेशियो क्या है? 20% ऑफ द मनी इन कैश. एंड रिजर्व रेशियो क्या है? 10%. So if I put this value 1 plus 20% माने 0.20 upon 0.10 plus 0.20, which means 1.20 divided by 0.30. तो बेटा आंसर आ जाता है 4. Right? So all of you are correct. Money multiplier will come out to be 4. Correct. ठीक है. Next question बेटा. Question number 3. Try to do this question. A bank holds excess reserve in addition to required reserve ratio. If the reserve requirement is 8%, but banks hold additional of 2% as excess reserve, what is the money multiplier? Try to do this question, beta. आपको दिया हुआ है रिजर्व रेशियो 8%, एक्सेस रिजर्व 2%. आपको निकालना है मनी मल्टीप्लायर. Okay. How about others? Good. Very good, बेटा. Very good. तो इसमें बहुत सिंपल है. जब भी हमें एक्सेस रेशियो और रिजर्व रेशियो दिया होगा, whenever we will given both excess ratio and reserve ratio, we will go ahead and we will find something which is called as effective reserve ratio. हम एक चीज निकालेंगे और उसे हम बोलेंगे effective reserve ratio. Effective reserve ratio basically RR plus ER होगा. So 8% plus 2% माने 10%. सो माई सपोज क्वेश्चन में यही बोल देते कि फाइंड इफेक्टिव रिजर्व रेशियो, अगर क्वेश्चन यही आ जाता. सो देन ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर दैट इफेक्टिव रिजर्व रेशियो इज नथिंग बट इट इज गोइंग टू बी दिस बेटा, आर आर प्लस ई आर. इसी को हम इफेक्टिव रिजर्व रेशियो बोलेंगे. ठीक है. अब क्या हो जाएगा बेटा? व्हाट इज इफेक्टिव रिजर्व रेशियो? 10%. तो बस फॉर्मूला में लगा दो मनी मल्टीप्लायर के. सो व्हाट इज गोइंग टू बी मनी मल्टीप्लायर? 1 अपॉन ERR. 1 upon 10% means 0.10 माने 1 by 0.1, which means 10. So the correct answer in this case will be 10. So yes, all of you are correct. Answer will be 10.
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, ट्राई टू डू दिस. Suppose reserve requirement is 5%, bank hold 3% as excess reserve, individual hold 10% of deposit in cash. Find money multiplier in this scenario. Find money multiplier in this scenario. तो आपको दिया हुआ है RR 5%, ER 3%, and currency in cash form 10%. Find money multiplier. Try this, beta. Anyone? बेटा हम हर तरीके का वी आर डूइंग वन ऑफ ईच टाइप फॉर मनी मल्टीप्लायर. इसके बाद मनी मल्टीप्लायर में कोई भी न्यूमेरिकल पेंडिंग नहीं होना चाहिए. यू शुड बी अवेयर अबाउट ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन दिस केस. हाउ अबाउट अदर्स? तो देखो जरा ध्यान से. सो बेटा, जैसे मैंने अभी आपको बोला, पहले आप निकालोगे इफेक्टिव रिजर्व रेशियो. इफेक्टिव रिजर्व रेशियो विल बी रिजर्व रेशियो, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो प्लस एक्सेस रेशियो. रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो है 5% एंड एक्सेस रिजर्व रेशियो है 3%. तो माने दिस विल बी 8%. ये हो जाएगा आपका इफेक्टिव रिजर्व रेशियो. ठीक है बेटा, अब हमें निकालना है मनी मल्टीप्लायर. मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला इस केस में होगा 1 प्लस, इट विल बी कैश रेशियो अपॉन इफेक्टिव रिजर्व रेशियो प्लस कैश रेशियो. तो कैश रेशियो हमें दिया हुआ है 10%, माने 1 प्लस 0.10 अपॉन इफेक्टिव रिजर्व रेशियो वी हैव फाउंड आउट एज 8%, माने 0.0 आर 8 प्लस 0.10. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्हाट विल वी गेट? ये हो जाएगा बेटा 1.10 डिवाइडेड बाय 0.18. ठीक है, तो जब इसे आप सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर एज 6.11. So all of you are correct. Yes, the answer will be 6.11. Correct. Okay, beta. Next question. This is the question, beta. Try it. The demand for money is given by this equation. ठीक है, हमें पता है कि जब भी हम डिमांड फॉर मनी का इक्वेशन देखेंगे, हमेशा याद रखना है इट हैज टू बी पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम एंड नेगेटिवली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट. और वो ही हमारे यहाँ पे भी हो रहा है, पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम एंड नेगेटिवली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट. तो एकदम करेक्ट डिमांड फॉर मनी इक्वेशन है. नेशनल इनकम इज गिवन टू यू एज $1,000 billion. Nominal interest rate is given to you as 5%. Calculate the demand for money. Very simple, beta. Try it. Calculate the demand for money. What will happen? Simple, इसमें हमें plug in करना है values बस. So demand for money will be 500 plus 0.5, 1000 plus, sorry, minus 1000, 5% माने 0.05. ठीक है, so when you will be plugging these values, you will get the answer as 950. अच्छा, suppose the question would have said something different.
अगर ये बोलने की जगह कि कैलकुलेट डिमांड फॉर मनी, सपोज क्वेश्चन ये बोलता कैलकुलेट सप्लाई ऑफ मनी एट इक्विलिब्रियम, फिर देन व्हाट वी विल डू बेटा? अगर क्वेश्चन ने डिमांड फॉर मनी का इक्वेशन दिया है बट उन्होंने बोला कैलकुलेट सप्लाई ऑफ मनी एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे वी नो डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी आर इक्वल, तो जितना डिमांड फॉर मनी होगा उतना ही सप्लाई फॉर मनी भी होगा, दे विल बी द सेम। तो सप्लाई ऑफ मनी विल ऑल्सो बी 950 ओनली, है ना? एट इक्विलिब्रियम सप्लाई ऑफ मनी भी 950 ही है, डिमांड हैज टू बी इक्वल टू सप्लाई, राइट? सो बोथ विल बी 950। ठीक है बेटा, ट्राई दिस क्वेश्चन। योर गिवन मनी सप्लाई इज फिक्स्ड एट 1200 बिलियन, ठीक है, एंड द डिमांड ऑफ मनी इक्वेशन इज गिवन टू यू, वेयर वाई इज 2000 बिलियन डॉलर। आपको निकालना है इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट वेयर मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई। फाइंड इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट वेयर मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई। ट्राई दिस क्वेश्चन बेटा। मनी सप्लाई इज फिक्स्ड एट 1200, डिमांड ऑफ मनी का इक्वेशन दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट। कैसे कर सकते हैं हम बेटा? इक्विलिब्रियम पे डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी दे आर इक्वल। डिमांड ऑफ मनी का इक्वेशन दिया हुआ है 400 प्लस 0.2y minus 600i and supply of money fixed at 1200 पे, and y is given to you as 2000, तो y की जगह you will plug 2000, right? तो plug कर दो, just put this, so what will you get? 400 plus 0.2 2000 minus 600i equal to 1200, equal to 1200, तो क्या हो गया बेटा? 400, this will be plus 400 minus 600i equal to 1200, 800 minus 600i equal to 1200 minus 600i equal to 400, I is minus 4/6, interest rate is coming negative, है ना? तो नो इश्यूज बेटा, इंटरेस्ट रेट कैन कम नेगेटिव। हाँ, अच्छा, इस केस में एक सिंपल बात है हमें जो समझनी होगी कि इफ द ऑप्शन सेज राइट इंटरेस्ट रेट इन एब्सोल्यूट वैल्यू, हाँ, सेलेक्ट करना है ऑप्शन और ऑप्शन में सिर्फ 0.667 दिया हुआ है, तो वी विल गो विद दैट ऑप्शन, देयर इज नो अदर चॉइस। बट यहां पे इंटरेस्ट रेट नेगेटिव आ रहा है, वी नीड टू कीप दिस इन माइंड, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, suppose money demand function is given by this equation, supply of money is fixed, income level is increased, calculate change in equilibrium interest rate। अब आपको इंटरेस्ट रेट नहीं निकालना है, आपको न्यू इंटरेस्ट रेट एंड ओल्ड इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस निकालना है।
You have to find change in equilibrium interest rate. Give it a try बेटा, कोशिश करो करने की. तो डिमांड ऑफ मनी दिया हुआ है 200 प्लस 0.4y minus 800i. Initially, y is 1500. तो डिमांड फॉर मनी कितना हो जाएगा बेटा? 200 प्लस 0.4 1500 minus 800i, which means you will get 200 plus 600 minus 800i. 800 minus 800i. ये इनिशियल डिमांड फॉर मनी इक्वेशन है. न्यू डिमांड फॉर मनी इक्वेशन क्या होगा? When y is 1800. तो अगर y को हम 1800 प्लग करते हैं, व्हाट विल वी गेट? 200 प्लस 0.4 1800 माइनस 800i. 200 प्लस 720 minus 800i. 920 minus 800i. So you have got two separate demand equations. Demand for money के दो अलग equations आ गए हैं. एक ये when income is 1500 उसके साथ का आया है, and the other one is when income is 1800 you have got another demand for money equation. दो अलग demand for money equation आए हैं. इनको हमें equate करना है supply of money से, and supply of money is fixed at 1400. So एक बारी हम इस demand for money equation को जो हमने यहां निकाला है इक्वल टू 1400 करेंगे बेटा, यहां से आपको आई आ जाएगा 0.75. एंड इन द अदर केस हम डिमांड फॉर मनी को इस इक्वेशन से इक्वेट करेंगे सप्लाई ऑफ मनी से 1400 से, एंड वी विल सॉल्व फॉर आई. ठीक है, यहां से यू विल गेट अनदर आई एंड यू विल गेट आई एज 0.60. सो यू विल गेट टू सेपरेट आई. तो हमें निकालना है चेंज इन इंटरेस्ट रेट, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रेट. तो डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रेट विल बी 0.15. सो ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, एकदम ठीक आंसर है. द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रेट विल बी 0.15. दैट इज द करेक्ट आंसर. करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. ट्राई दिस. The supply of money in economy is 2000. Demand for money is this given to you. National income is 8000 billion. Initial interest rate is 10%. If central bank increases money supply by 500, calculate the new equilibrium interest rate. Calculate the new equilibrium interest rate. Try beta. तो आप देखो मनी सप्लाई इज इंक्रीजिंग बाय 500. बाय वर्ड यूज हुआ है. न्यू मनी सप्लाई 500 नहीं है, इट इज इंक्रीजिंग बाय 500. तो न्यू मनी सप्लाई क्या हो जाएगा बेटा? 8000 प्लस 500 8500. दिस विल बी द न्यू मनी सप्लाई. और मनी डिमांड का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? 0.25y माइनस
1000 माइनस 1000 जहां पे आपका नेशनल इनकम, ओ सॉरी, दिस इज नेशनल इनकम, मनी सप्लाई इन इकोनॉमी विज 2000, ये 2000 हुआ, दिस इज 2500। ठीक है बेटा, तो न्यू मनी सप्लाई हो गया 2500, नेशनल इनकम इज 8000, तो नेशनल इनकम की जगह हम 8000 प्लग इन कर लेते हैं, minus 1000 so this will give you 2000 minus 1000 ठीक है। तो बेटा ये रहा डिमांड फॉर मनी इक्वेशन, ये रहा सप्लाई फॉर मनी, equate demand for money to supply for money, equate demand and supply and find the answer. So you will get the answer as 0.50. Here a supply for money 2500, demand for money is 2000 minus 1000 यहां से आई की वैल्यू निकाल लो ना, सो यू विल गेट 500 इक्वल टू minus 1000 I will be minus 500 by 1000, so minus 0.5 actually, है ना। So basically what we notice here is that this, जो ये इंफॉर्मेशन दी थी कि इनिशियल इंटरेस्ट रेट इज 10%, दिस इंफॉर्मेशन वाज एक्स्ट्रा, इस इंफॉर्मेशन का कोई भी काम नहीं था, देयर वाज नो नीड फॉर दिस इंफॉर्मेशन, दैट इंफॉर्मेशन इज एब्सोल्युटली एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा भी दिया हो सकता है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके बेटा, this question, try to do question number 9. The demand, yes, you're right. That is why we will not put that, because ideally this would also be with some negative sign only beta. This should have been minus 10 instead of plus 10. कुछ और interest rate होता तब हमारे को we would have got the right answer for the initial money supply. So yes, this is absolutely extra information. We don't need this. We should not be using this at all. ठीक है, come to the next question. Try this. The demand for money is given by this equation. MD is equal to PY by V. If the price level increases from 100, P is increasing from 100 to 120. National income is 5000. Velocity of money is 2. Calculate new demand for money. Try this. Give this question a try. बहुत सिंपल है बेटा, you're just given quantity theory of money का equation, demand for money equation using quantity theory of money, है ना। तो वैल्यूज प्लग इन कर देते हैं। P has increased from 100 to 120, तो हम तो 120 ही लेंगे। Y is 5000 and V is 2, this will be 60, this will be 300000। तो करेक्ट, डिमांड फॉर मनी विल बी दिस मच। ठीक है, डू दिस क्वेश्चन बेटा। Suppose the reserve requirement is 10%. Initial deposit of 1 lakh is made in commercial bank. Calculate total amount of money that can be created
through credit creation. So reserve requirement is 10%. Initial deposit is 1 lakh. You have to calculate total amount of money. तो बेटा यहां पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट टोटल मनी इज इनिशियल इनटू मनी मल्टीप्लायर. इनिशियल इनटू मनी मल्टीप्लायर. और हमारा मनी मल्टीप्लायर क्या है? 1 बाय रिजर्व रिक्वायरमेंट. 1 by 0.10, that means 10. So it means if I put it in this formula, क्या मिल जाएगा हमें? Total will be initial into 10. That means 10 lakh. Initial was 1 lakh, so it will become 10 lakh. है ना? So total amount of money that can be created through credit creation, that will come out as 10 lakh. Okay, do this question beta. Question number 11. Suppose reserve requirement is 12%. Bank decide to hold 3% in excess reserve. Bank has received initial deposit of 2 lakh. Calculate total amount of money that can be created through credit creation. करो बेटा ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. Reserve requirement is 12%. Excess reserve is 3%. और आपको दिया हुआ है इनिशियल डिपॉजिट इज 2 लाख. बेटा हमने अभी अभी किया है इस तरीके का क्वेश्चन. व्हाट विल बी टोटल अमाउंट ऑफ मनी? इनिशियल इनटू मनी मल्टीप्लायर. बेटा मनी मल्टीप्लायर क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय इफेक्टिव रिजर्व रेशियो. बेटा इफेक्टिव रिजर्व रेशियो क्या है? रिक्वायर्ड रेशियो प्लस एक्सेस रेशियो. रिक्वायर्ड रेशियो है 12%, एक्सेस है 3%, सो दिस विल बी 12 प्लस 3 15%. तो बेटा ये हो जाएगा 1/0.15. दैट मीन्स 100 डिवाइडेड बाय 15. ठीक है. अब बेटा पुट दिस वैल्यू हियर. इनिशियल है 2 लाख एंड मनी मल्टीप्लायर है 100/15. जो भी आंसर यहाँ पे आपका है, वट एवर आंसर यू गेट हियर. सो ऑल ऑफ यू आर करेक्ट. आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली दिस. ठीक है, दैट्स द करेक्ट आंसर. Just look in options that what is the closest answer given and mark that. कभी कभी वो decimal को they go ahead and they give you in whole number. Please mark accordingly. Okay, try to do this question better. Question number 12. The central bank lowers reserve requirement from 15 to 8%. Banking system has total reserve of 500. Calculate increase in potential credit that can be created because of this. आपको बताना है कितना एक्स्ट्रा क्रेडिट क्रिएट हो सकता है. Try to do this question.
तो पहले आपको दिया हुआ है कि रिक्वायर्ड रिजर्व जो थे वो 15% थे। न्यू रिक्वायर्ड रिजर्व जो है बेटा वो 8% है। एंड टोटल रिजर्व्स दे आर 500 million। आपको निकालना है इंक्रीज इन क्रेडिट। सो वी नो व्हेन रिजर्व रेशियो डिक्रीजेस यू कैन जनरेट मोर क्रेडिट। आपको निकालना है व्हाट इज द इंक्रीज इन क्रेडिट। तो वेरी सिंपल बेटा, पहले हम मनी मल्टीप्लायर इनिशियली निकाल लेते हैं। इनिशियली मनी मल्टीप्लायर इज 1 divided by 0.15 because this is 15%. तो 1 divided by 0.15 will be 6.67। तो इनिशियली जो हमारा क्रेडिट क्रिएट हुआ होगा, इनिशियल क्रेडिट क्रिएटेड, वो हो जाएगा मनी मल्टीप्लायर इनटू initial amount 500. So that amount is coming out as this. Then we have to find new money multiplier with 8%. So what will be new money multiplier? 1 by RR, 1 by 0.08. तो न्यू मनी मल्टीप्लायर आ जाएगा बेटा ये। So what will be new total credit created? 500 into new money multiplier, माने this will be this amount. So what is the extra credit created? Find the difference between the two. Extra credit created, difference between this and this amount. Extra credit created will be 6250 minus 33352915. This is the extra credit created in the economy. Okay. Why multiply with 500? It is total reserve, not initial deposit. Okay, good question. So basically, beta, in such questions, we assume that whatever are the reserves of the bank, they are the total money that the bank has to create credit, because I am not given any initial deposit. So wherever I am not given a deposit, I can go ahead and I can consider this to be the deposit. Okay. Alternatively, if, although isme we are assuming it to be the total reserves as the credit, if you want, you can find the initial deposit also. Okay. You can go ahead and do that also. So it says that your reserve requirement is 15% of the deposit. So 15% of D, that is 500. 15% of D is 500. So 15 into D by 100 is 500. So your deposit will be 500 into 100 by 15. You can go ahead and you can find the amount of your deposits also. Initial deposits also. ठीक है? Even if you do this, suppose हमारी initial deposits की कोई यहाँ से value आ गई. You will, so supposedly let's find this value. So 500 into 100 divided by 15. So your initial deposit will come out as 3333.33. Even if you go ahead and you find out the initial deposit, then also it is fine. So what will be the total credit created in that case? The total credit created will be multiplier into initial deposit. Multiplier क्या है बेटा? 1 by 0.15. And initial deposit कितने हैं? This amount.
Just find out the credit created. Go ahead and give this value. Try to find the credit created in this case. So you will get 100 by 15 into 500 into 100 by 15. You can try it with this method also if you want. But usually it's not that complex. We can directly solve using the total reserves itself. Okay? But if you want, you can find the total deposits. And then you can just find the amount of credit created using those deposits. That's also fine. Okay? Okay, so just calculate this value. 100 into 500 into 100 divided by 15 divided by 15. So this amount will come out as 22222.23. This will be the credit created. This will be the credit created. Okay. And then what will be the new credit created? 1 by 0. So what is your new reserve requirement? 8%. 1 by 0.08 into 3333.33. Right? So this will be coming out as 100 by 8 into 3333.33. So if I calculate this will be 500 into 100 into 100 divided by 8 divided by 66.67. Okay. You can find the difference between the two. Find the difference between the two. Okay. But no, usually wording may be different, but it's not that complicated in your exam. ऐसा नहीं होगा. मतलब ये वाला method हमें नहीं use करना होगा. This will be given to you as initial deposits only directly. You don't have to really spend so much time in finding the initial deposit, but I have just solved it for you. Huh? In case you get similar question in, अगर आपको सही में deposit निकालने हैं, तो you can use this formula to find the deposit. Right? Okay. In exam, it is better to calculate with this information only, not with that information. ठीक है. Take the next question. Suppose a bank receives a deposit of 3 lakh. The reserve requirement is 10%, but 15% of deposits are held in the form of cash. Calculate total amount of credit that can be created in the economy. Try this question better. Give this question a try. Bank receives a deposit of 3 lakh. Reserve requirement is 10% and amount held in cash is 15%. Calculate credit created. Very simple, बेटा पहले multiplier निकाल लो. Multiplier will be 1 plus CR upon RR plus CR. 1 plus 0.15 upon 0.10 plus 0.15. 1.15 by 0.25.
ठीक है, तो हमारा जो मल्टीप्लायर आएगा दैट विल कम आउट एज 4.6. Once the multiplier is found out, find the total credit creation. Initial deposit into money multiplier. So 3 lakh into 4.6, which means 13 lakh 80,000. 13 lakh 80,000. So correct. That's the right answer to this question. ठीक है बेटा एकदम. Okay. Let's take the last question. A bank has 1 million in excess reserve and decides to lend out maximum amount it can. The reserve requirement is 12%. How much money will the bank's lending create and what is the total change in money supply? Try this question, beta. Take it as a homework question, in fact, and give it a try. Bank has 1 million in excess reserve and required reserve requirement is given as 12%. आपको बताना होगा कितना मनी बैंक क्रिएट कर सकता है एंड टोटल चेंज इन मनी सप्लाई. Take it as a homework question. Try to do this question, beta. Yes, yes. You use this multiplier only. Credit multiplier is synonymous to this money multiplier formula, beta. Correct. एक ही बात है. ठीक है. Okay, beta. So do this question. Post your answer in the Telegram group. I will check them. Thank you, beta.